Okay, good afternoon to all of you. I hope you are fit, healthy, and fine. The studies are going good after a festive season of 4 to 5 days off. Okay, we'll start with the role of civil society. And yesterday, I was reading this journal, British Journal of Sociology. In that, there was one article, Empowering Change, the crucial role of civil society in climate change mitigation. This article just a coincidence that today we are about to discuss the role of civil society and pressure group. And this British journal, there was this article published in May 2024 by a sociologist called as Shilpa Angel. The research of this was conducted in Ernakulam district of Kerala. Both quantitative and qualitative techniques of data was used. They have written one 19-page article, which was published in the Journal of Britain of Sociology, where they are discussing the role of civil society in climate change. Obviously, I cannot give you the summary of entire 19-page article here, but let's start this role of civil society or pressure group from this very article. As of now, what we have discussed with respect to this particular chapter is that you have looked into the meaning of civil society and pressure groups, and at the same time, we have looked into certain features and types of pressure groups and civil societies. We did discuss variety of sociologists who talks about the different types of pressure groups and also the nature of civil societies which are more or less prevalent. Civil society, as we know, is one of the voluntary organizations. Let's understand this. Civil society or pressure group is a form of voluntary organization. Whenever we use the term voluntary organization, it often indicates that all the work which they undertake is of voluntary in nature. They take up the issues on the basis of their necessities, on the basis of their respective priorities. Unlike state, who has a moral and legal responsibility to fulfill the needs of the people and ensure their well-being, civil societies and pressure groups are more or less those organizations who undertake the similar work of ensuring well-being of the people, but at the same time, the way they work, one cannot make them accountable and responsible that they are bound to do this work. It's always a voluntary work which they often undertake. They may stop from working, they may change the nature of their goals, they may change their nature of objectives, the methodologies which they use, they may shift from electioneering to propagandizing to lobbying. There could be varieties of other aspects as well. Now, what is the importance of civil society or pressure groups in the contemporary times? The importance of civil society and pressure group lies within the contribution which these voluntary organizations makes in today's 21st century. The contributions are so vital for not just the existence of civilized society, but their contribution is equally very paramount and important for ensuring efficiency in the system. कि सिर्फ इसलिए सिविल सोसाइटी की इंपॉर्टेंस नहीं है कि civil societies would able to provide voice to voiceless. Civil society की importance इसलिए है कि today many times the work cannot be achieved or played in an efficient manner if the civil society is absent from the society. अब civil society's contribution lies in multiple spheres. Just like this British Sociology journal discusses the role of civil society in climate change. Similarly, the role of civil society also lies in governance, vulnerable sections, inequality. There are multiple roles with the civil society's plays. Some
Identity-based civil societies and pressure groups often focus on protecting the interest of certain class or social groups. Issue-based pressure groups and civil societies, on the other hand, play a more broader role in propagating a particular issues. Last issue of EPW. Now, these 3-4 days, I actually read varieties of articles. And after a long time, it was like enlightening. Maza aa raha tha padh ke kuch, because the time limit was always very narrow in my case. I read one article in EPW which talks about menstrual leave. Menses ki baat. Because there has been a debate on this starting from 2017 till 2024. Menstrual leave is still not legally backed leave. Although the states like Bihar started providing menstrual leaves since 1992, 2 days paid leaves are provided to women irrespective of public or private sector employment in the state of Bihar. In that article, I found out that how civil societies and pressure groups are also playing an important role in vouching or influencing the government to provide menstrual leaves. If you take these two examples, you will figure out that civil society have played multi-dimensional roles. It contributes to the private sphere, it contributes to the public sphere as well. The precise role of civil society can be summarized, but overall, whatever may be the nature of summarized role or version which we are looking into, civil society has contributed to every sphere in the modern society. Education, technological development, policy making, policy implementation, policy monitoring, vulnerable sections, tackling the inequalities, tackling the stigmatizations present in the societies, enhancing employment, improving the hygiene of a society, improving the housing patterns of the society, largely vouching for developmental activities like construction of roads, canals, etc., agriculture, service industries, industrializations. In almost every sphere, the civil society has immensely contributed. Therefore, what we are trying to say here is, in modern society, what state does, that is also done by civil society. But the way they function is way different. What I mean from this is, जो एक्टिविटी स्टेट करता है, सारी की सारी वो डेवलपमेंटल और प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज are also taken up by civil societies and pressure groups. But the way they approach them, way they perform it, is way different. स्टेट से थोड़ा सा हट के करता है सिविल सोसाइटी, काम वही करता है, अंदाज अलग है, तरीका अलग है. इज एवरी बच्चा इज विथ मी टिल हियर? के it's almost impossible to summarize or point out the entire role of civil society. क्यों? क्योंकि ऐसा कोई स्फीयर छूटा नहीं है जहां पे सिविल सोसाइटीज एंड प्रेशर ग्रुप्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, दे आर नॉट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिवली कंट्रीब्यूटिंग फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ दोस सेक्टर्स. मोबाइल फोन को डिस्ट्रीब्यूट करने से लेके एजुकेशन को बढ़ाने तक का रोल सिविल सोसाइटी परफॉर्म करता है. लेट्स फर्स्ट लुक इनटू, थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को ब्रेकअप करूंगा, बी वेरी केयरफुल हियर. आज के बाद अगर कोई सिविल सोसाइटीज का नाम पढ़ो, कभी पेपर में एग्जाम्पल्स पढ़ो, तो थोड़ा सा ये जो नोट्स रहेंगे वहां पे वो एग्जाम्पल्स नेम्स के साथ लिख के रख लेना. I'll highlight some of the civil societies here, then I will go to Daniel Bell, and then I'll go to the theoretical perspective of role of civil society. Paul Streeton से लेके varieties of application ways. Digital Empowerment Fund. This is not a fund, this is a name of an organization.
I'll repeat, Digital Empowerment Fund. This organization, during the time of COVID-19, collected the spare mobile phones and distributed among the poor sections of society so that the education of their child is not impacted. The child is able to take up those online classes because during the time of COVID, or after some times, even after the COVID lockdown, the classes were more or less in an online format. एक ऐसी सिविल सोसाइटी जो आपसे और मेरे से मोबाइल फोन अगर हमारे पास स्पेयर है, इनको डोनेट कर दिया, एंड दे यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस मोबाइल फोन्स अमॉन्ग द पुअरेस्ट सेक्शंस। कैसे सिविल सोसाइटी एजुकेशन अवेयरनेस और एजुकेशन स्प्रेड के लिए काम कर रही है। दूसरा तरीका देखें तो कैसे सिविल सोसाइटीज टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रही है। आगे बढ़ते हैं। खालसा 8। जब भी बात आती है सिविल सोसाइटी की, हम और आप ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। लुक एट दिस ऑर्गेनाइजेशन, अगेन ए एनजीओ, what it did during the time of COVID-19, when any people lost their life because of COVID, their bodies were not given to the relatives of those respective persons because of the fear of spread of COVID. What this organization did was they used to ensure that those people who have lost their life because of COVID, since their relatives cannot perform the cultural prescriptions prescribed for the death rituals, this organization used to say, provide the ultimate departure to the dead ones by following their cultural practices, be that Hindu, Muslim, Sikh, Jain, Isai और पारसी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने उन बॉडीज को कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए डिस्पोज दे स्टार्टेड डिस्पोजिंग दोज बॉडीज बाय अडहेरिंग टू दोज रेस्पेक्टिव रिचुअल्स ऑफ अ गिवन रिलीजन, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या कोई भी धर्म का क्यों हो, उनके धर्म के मुताबिक उनका लास्ट डिपार्चर किया गया। तो क्या सिविल सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रही है in ensuring that the cultural value pattern prevalent in any societies are followed? That means civil society does uphold the cultural values or helps in protecting the cultural values prevalent in the society. Association of democratic rights, and in fact another organization which can be written here is India Against Corruption. These are the two specific categories of civil societies who have played a prominent role in building, awareness of rights among the masses by not only highlighting the glitches present in the governance, but at the same time making people aware about the rights like that of RTI and National Food Security Act, Manrega. They have made people more educated and literate about the rights of them. Not only this, they have also played a prominent role and crucial role in participating and conducting the social audit exercise prevalent in the society, making the government much more accountable in society. Societies like that of Seva and Gunj have played a very important role in the empowerment of women in Indian society. Some organizations are specifically working in the rural segment, building or bringing women together by forming a self-help group. Yet another organizations are working in the urban sphere, ensuring and providing the right conditions for the working women to stay outside their houses in a more respectable and safe environment.
Some have worked in the spheres of women, some have worked in the spheres of lower caste, some have worked in the spheres of rights, some has worked in the spheres of climate change, some have worked in the spheres of technological development. Yet another organizations are working in the spheres of telemedicine. Some organizations are working in ensuring health security of the people by providing vitamin D supplements, folic acid supplements, etc., 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 etc. There is no dearth of examples here. So the first point every bacha of mine should keep in mind is that you need to have some examples of civil societies with you, so that these examples can be used when you are writing the sociological elaboration. These organization names can be used to further add depth to the explanations which you are providing sociologically. So civil societies have played a very, very prominent role in the society. The functions of civil societies have only expanded in the 20th century. With the rise of globalization, the role of civil society and the contribution which it has made towards both quantitative and qualitative aspects of development are, are nothing less than an important contribution, can be compared to the contributions made by the welfare state in the era of 1990s. इतनी उम्दा contribution है कि जो शायद state ने 1990 में किया, उस टाइम से स्टार्ट किया वेलफेयर प्रोविजंस लगा के, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल सिविल सोसाइटी आज प्ले कर रही है, और ये गोल और कंट्रीब्यूशन और स्ट्रांग हुए हैं विद द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. कैसे? अब ध्यान से समझेंगे. मान लेते हैं दो टाइप की सोसाइटी है. एक ऐसी सोसाइटी जहां पे स्टेट जो है बहुत स्ट्रांगली वेलफेयर प्रोविजंस इंश्योर करता है, इक्वालिटी इंश्योर करता है, राइट्स इंश्योर करता है. दुनिया में एक ही सक्सेसफुल कंट्री है, हालांकि हो there could be small nation states which could be present, because I am not a geographical expert that I'll be knowing all the 305 or 10 countries. As far as my sociological knowledge goes, at the best there are two. The second example is much more superficial. There are only few examples who are not democracies, but they have worked better than democracies. The best example for this you will find is Singapore. Singapore can be considered as the best form of benevolent autocracies. A single party rules the entire country. And the party has been so citizen-centric that you will find clean roads, clean sanitations, near about equality, complete absence of poverty, and strong law and order mechanisms. That as smallest of a mistake done in Singapore can lead to very strong coercive punishments. अगर आपने रोड पे भी लिटर कर दिया है ना, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग भुगतान करना पड़ेगा, चाहे फिजिकल सेंटेंस से या फिर फाइन से. एक छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स है उधर. सिंगापुर जैसी कंट्री है जिसमें एब्सोल्यूट लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ने फुलफिल की है. उन्होंने हर किसी का ध्यान रखा है, इक्वालिटी इंश्योर की गई है, पॉवर्टी को नियर अबाउट नाम और निशान नहीं मिलेगा सिंगापुर में. आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज माइग्रेशन इज आल्सो वेरी स्ट्रांग टुडे इन द कंटेम्पररी टाइम्स. बट इफ यू गो बैक 30-40 years down the line, Singapore was one such society which almost had 0% of poverty. The word percentage can be added to 0. On the other hand, दूसरी तरफ अगर हम मान ले कुछ लार्ज कंट्रीज लाइक दैट ऑफ इंडिया और अमेरिका, ठीक, अगर सिंगापुर जैसी सोसाइटीज है जहां पे स्टेट प्लेज इट्स रोल वेरी वेरी एफिशिएंटली,
then in such circumstances the role of civil society remains very negligible. इन सारी सोसाइटीज के अंदर सिविल सोसाइटीज का शायद बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, but these societies are very limited. As in most of the societies, we see that states are actually becoming overburdened. Take into the societies of India and United States of America, where there exists a huge degree of diversity. चाइना के अंदर सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी कृष्णा. ऑटोक्रेसीज के अंदर सिविल सोसाइटी कैन नेवर एग्जिस्ट, रिमेंबर दैट. तो ऑटोक्रेसीज का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, ये बेनोवलेंट ऑटोक्रेसी है, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया. थोड़ा बहुत दूसरा एग्जांपल हो सकता है, थोड़ा बहुत क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ऐसी सोसाइटीज में सिविल सोसाइटीज वुड नॉट इवन एग्जिस्ट. व्हाई? Civil society requires democracy for its existence. In an autocratic society, an alternative opinion would not be promoted. Any voice raised against the state would be eliminated completely. So in autocracies, there are no civil societies. Civil societies are either present in the absolute form of democracies or in the benevolent autocracies where there is an opinion, where there is a space provided for people to articulate their opinion. Is everybody clear? In a state, in a society where the state plays its role very efficiently, in such circumstances, the role of civil society, if at all it exists, is a secondary one. But in a society where there is present a huge form of diversity and the state is overburdened, एक तो डाइवर्सिटी काफी हाई है और स्टेट क्या है, कई बार ओवरबर्डन्ड हो जाता है. That the state has to play multiple functions. हेल्थ को भी देखना है, एजुकेशन को भी देखना है, डेवलपमेंट को भी देखना है, टेक्नोलॉजी को भी देखना है, रेगुलेशंस को भी लॉस को भी देखना है, बिल्स भी बनाने हैं, पॉलिटिक्स भी देखना है, एवरी एस्पेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है. State becomes very much overburdened, at least from 1990s onwards. We see with the rise of good governance and new public management, we see that the welfare state became a well-established principles in majority of the democratic societies, where the goal of state was not only to promote law and order, but the goal of state was also to play the welfare functions of ensuring the well-being of the people by providing educate, health, food and educational benefits, and in many circumstances even unemployment allowances if that is a possibility. ऐसे सोसाइटीज के अंदर सिविल सोसाइटीज आर irreplaceable. Such societies cannot optimally function without civil society. यहां तक हर बच्चा मेरे साथ कि सिविल सोसाइटी की इंपॉर्टेंस बहुत हद तक डेमोक्रेसी के अंदर इतनी ज्यादा है कि डेमोक्रेसी कैन एट द बेस्ट रिमेन थियोरिटिकल without the existence of civil society. सिर्फ इतना ही काफी नहीं है. हुआ ये जो अमेरिका और इंडिया जैसी सोसाइटीज जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं हम, इन डेमोक्रेसी के ऊपर जब ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट आया, इस ग्लोबलाइजेशन से दो बड़ी बड़ी डिबेट आई. मैं एक ही पार्ट डिबेट डिस्कस करूंगा अभी. विद द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ऑटोक्रेटिक पे नहीं हुआ, ध्यान रखना उस लेवल पे. क्यों? ऑटोक्रेसी वाले तानाशाह होते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट को खत्म कर सकते हैं. जैसे चाइना के अंदर इंटरनेट को खत्म कर दिया गया, या फिर बहुत इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से रेगुलेट किया जाता है कि चाइनीज गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि जो चाहिए, जो जाना चाहिए उतना ही जाएगा, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से एक फायरवॉल डेवलप की हुई है. तो ऑटोक्रेसी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ऑटोक्रेट्स कंट्रोल कर ले जाएंगे, फिर भी कहीं ना कहीं सीप इन तो करेगा ही करेगा ग्लोबलाइजेशन.
ग्लोबलाइजेशन जब इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज पे आया तो दो बड़ी बड़ी हवाएं उठी. Two specific theoretical opinions started developing in sociology. The first one was spearheaded by a sociologist called as Daniel Bell, and second one was David Held. दो सोशोलॉजिकल थियरीज डेवलप होनी स्टार्ट होती है by looking into the impact of globalization in the democratic societies. दोनों को एक लाइन में समराइज करूं तो दिमाग में ये फिट रखना. ये बोलते हैं स्टेट का रोल ग्लोबलाइजेशन के कारण वीक हो गया. स्टेट वीक बन गया, स्टेट कुछ नहीं कर पाएगा. डेविड हेल्ड बोलते नहीं भाई साहब, स्टेट तो ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन के कारण. स्टेट का रोल ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया. किसके कारण? ये ग्लोबलाइजेशन के कारण. तो स्टेट हूं मैं, मेरे पे जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया तो एक आदमी ने बोला आप वीक पड़ गए हो. एक आदमी बोलता है नहीं भाई, इस ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट को और स्ट्रांग किया है. अब ये स्ट्रांग किया है कि डिबेट मैं फिलहाल नहीं करूंगा, बट ये वीक किया हुआ वाला डिबेट इंपॉर्टेंट है in order to add that sociological analysis to the contribution made by civil society. With the rise of globalization, it was seen that in the democratic society, as highlighted by Daniel Bell, state was too small to manage big issues and too big to manage small issues. ये स्टेटमेंट है डैनियल बेल का. Daniel Bell opined that with the rise of globalization, state in some context became too small to manage certain issues. कि कुछ इश्यूज ऐसी थी जो स्टेट एकदम छोटी सी कठपुतली है, उतने बड़े बड़े इश्यूज मैनेज नहीं कर पाएगा स्टेट. जैसे एग्जाम्पल, ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज. कोई भी एक स्टेट उसे ठीक नहीं कर पाएगा. ग्लोबल गवर्नेंस चाहिए उसके लिए. Daniel Bell vouched for, advocated for global governance with the rise of globalization. And he's a pure sociologist, American sociologist. तो कुछ चीजों के लिए स्मॉल हो गया स्टेट, बहुत छोटी सी चीज है, उसके लिए दे विल नॉट एबल टू मैनेज इट. और कुछ चीजों के लिए स्टेट वाज वेरी बिग टू मैनेज दोज लोकल इश्यूज. तो जो कॉन्सेप्ट है ग्लोकलाइजेशन का, ग्लोबल प्लस लोकल, ग्लोकलाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के लिए इन द इरा ऑफ ग्लोकलाइजेशन द स्टेट इन इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट. सिविल सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. A civil society can influence the larger issues faced by the entire world by building up coordinations, just like Transparency International, Amnesty International, UNFCCC, Earth Hour, or other organizations. And it is the very civil societies which can better manage the local issues in comparison to state, where the state is too big to interfere in the local issues. So if I use the opinion of Daniel Bell, a mesmerizing contribution of civil society can be seen, that with the rise of globalization, the power of civil society have only multiplied. As on one hand, the state is not having the capacity to manage global issues which can be better managed by the network of global civil societies, and the state becomes too big to manage the local issues which can be better managed by the participation of people which can be ensured by civil society. हर बच्चा मेरे साथ है यहां तक. जितना कंटेंट अभी तक बताया है, ये दो तीन एस्पेक्ट डेविड हेल्ड और डैनियल बेल के, सारा कंटेंट है
पावर एंड पॉलिटिक्स एंथनी गिडन्स की किताब से। एंथनी गिडन ने डेविड हेल्ड और डैनियल बेल का बहुत अच्छा सा डिबेट बताया है विद द चेंजिंग नेचर ऑफ डेमोक्रेसीज। तो मैंने यहां तक आपको कंट्रीब्यूशन नहीं बताई, मैंने यहां तक इंपॉर्टेंस बताई सिविल सोसाइटी की। आज सिविल सोसाइटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है? क्योंकि एक तरफ स्टेट का पावर शायद कम पड़ गया ग्लोबलाइजेशन में, लोकल इश्यूज काफी ग्लोबल इंपैक्ट रखते हैं, सिविल सोसाइटीज उसको बेटर मैनेज कर पाएगा। और साथ ही साथ में शायद स्टेट ओवरबर्डन भी हो गया वेलफेयर स्टेट के कारण, और इसके कारण सिविल सोसाइटी का होना इंपॉर्टेंट है। हेंस द वाइटैलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी कैन बी समराइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉफी आनंद, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, और इनका एक स्टेटमेंट है, बड़ा ही खूबसूरत स्टेटमेंट है, which shows the vitality of civil society in the modern times. According to Kofi Annan, the global problems requires a cooperation between state, private and civil society. कॉफी आनंद का ये मानना है कि आज जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है जो वर्ल्ड फेस कर रहा है, इनका सॉल्यूशन ना तो सिर्फ स्टेट के पास है, ना सिर्फ प्राइवेट के पास है, ना सिर्फ सिविल सोसाइटी के पास है। These problems can be better tackled when all the three works in tandem, when all the three functions in a very coordinated manner. Hence, whenever you are writing any answer on contribution of civil society, always start with a thumb rule. Thumb rule क्या? First discuss about the importance of civil society. I mean, इतनी important है ये organization आज कि without this many time people say if in a democracy civil society does not exist, that democracy is only theoretical. लोग यहाँ तक बोल चुके हैं कि फिर वो डेमोक्रेसी है ही नहीं, सिर्फ थियरी में डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी के एग्जिस्टेंस के लिए सिविल सोसाइटी बहुत जरूरी है। Now let's look into what is the precise role which civil society plays. और प्रेशर ग्रुप दोनों वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक? क्या रोल प्ले करता है? इफ यू लुक इनटू द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर आई सेड हर स्फीयर में सिविल सोसाइटी रोल प्ले करता है, क्लाइमेट चेंज में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, एक्सेट्रा। Can you recall one scholar which I actually discussed with you with respect to methods used by civil society? Let's see कितने लोगों ने रिवाइज किया पिछले 3-4 दिन। What are the methods used by civil society? कोई ऐसा? Oh, very good, अमनदीप, lovely. फिनर ने क्या बोला? सिविल सोसाइटी जो रोल प्ले करती है, ये देखना है इस रोल को प्ले कैसे करेगी ये, either going for electioneering, either going for propagandizing और either going for lobbying। ये 3 तरीके हैं जिससे ये अपना रोल अदा करने वाली है। अब now let's focus on, we know how, what are the methods used by civil society, but by using these methods, what role does civil society play in the modern society? अब आगे जो स्कॉलर्स आने वाले हैं, please do not develop a fear out of it. My goal is to give you as many scholars as possible. But ये तो प्रेशर ग्रुप और बिंदु, आई एम सॉरी यार, आप नहीं समझोगे लोग। मैंने आपको बोला था कंट्रीब्यूशंस जो हम देखेंगे वो दोनों की कंबाइंड है। 50 बार भी आपको लास्ट वाले में बताया था डिफरेंसेस प्रेशर ग्रुप और सिविल सोसाइटी, फिर भी
आई मीन यू पीपल डोंट रिवाइज, ये चीज क्लियर हो गई है। बिंदु, आई हैव ऑलरेडी सेड दिस कि कंट्रीब्यूशन दोनों की यही स्कॉलर्स लिखने या इसी तरीके से लिखनी, चाहे प्रेशर ग्रुप की पूछ लें या सिविल सोसाइटी की पूछ लें, ठीक। अब इसके बाद में अगर तुम्हें कोई स्कॉलर नहीं याद रहे तो तुम्हें सिर्फ एक आदमी याद रखना है। By chance, if you have a fear of scholar, that's obviously not the right thing as far as sociology, pol science, anthrophilosophy are concerned. There is one scholar which can help you to discuss the entire role of civil society. That is Paul Streeton. यहाँ पे लिखा है मैंने। पॉल स्ट्रीटन एक सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सिविल सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन क्या है या उसका रोल क्या होता है। Civil society, according to Paul Streeton, have importantly contributed by going for the following, because of the following stuffs. Civil society or pressure group expands the reach of the government, the private, and also the policies of government. Kaise? Civil society is organization which is having absolute people's participation. और जिन कोनों के अंदर सरकार नहीं पहुंच सकती है उन कोनों के अंदर सिविल सोसाइटीज पहुंच जाती है। And when the civil society is able to reach to those nook and corners of the society where the state's visibility is almost negligible, in that circumstances, it can make the government much more visible. It can take the policies of government to those nook and corners. And this expanded reach of the government policies can help us in providing or achieving the true objectives of those programs. Example, शायद रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सरकारी कर्मचारी नहीं पहुंच पाएगा इजीली until and unless those districts are well recognized. But civil society can easily penetrate to those regions and build up those awareness about sexual and reproductive health among those, workers, sex workers. And it can help in making the government policies more successful. Civil societies can penetrate even into the inlands of homes in private spheres, which state cannot do it. And as a result, because of its exceptional reach, the civil society can make the policy measures much more successful. Civil societies have also helped in bringing up participation of citizens within the developmental work. कई बार क्या होता है, स्टेट जब डेवलप करता है, मान लेते हैं ये एक एरिया है, स्टेट ने बोला हम यहाँ पे स्कूल बनाएंगे। अब स्टेट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करेगा या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का कोई कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वो लोग जाएंगे, जूनियर इंजीनियर 10 फला ढिमा एक्सेट्रा, वो सारे के सारे लोग जाएंगे, इधर स्कूल कंस्ट्रक्शन चालू कर देंगे। अब जब ये स्कूल बन जाएगी तो इसके बनाने में लोकल्स का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। और जब लोकल खुद पार्टिसिपेट नहीं करते तो दैट ओनरशिप ऑफ दैट एसेट डज नॉट एग्जिस्ट एंड मेनी टाइम्स दोज ऑर्गेनाइजेशंस में फेल because the people never participated in the process of development. Civil societies, rather than sending the outsiders, it ensures that the people participate in the process of development. And since it ensures or brings people's participation in the process of development, it helps in creating obligations on the people to manage those resources well. It largely empowers the people by creating accountability among the locals in ensuring the assets benefits the larger society of theirs. इसीलिए शायद ट्राइबल पंचशील एक पॉलिसी निकाली गई जहां पे लोकल का पार्टिसिपेशन एक कंपलसरी फिनोमेना सरकार ने निकाला, और वो लोकल की पार्टिसिपेशन सबसे बढ़िया तरीके से आती है थ्रू सिविल सोसाइटी। तो पॉल स्ट्रीटन क्या बोल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि सिविल सोसाइटी अच्छी क्यों होती है।
रीच ज्यादा होती है, पार्टिसिपेटरी इन नेचर होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। हमने पॉल स्ट्रीटन को यूज किया है इन हाईलाइटिंग द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी. Civil society enhances participation of people within the governance. Civil society also helps in making the government visible in the areas where the government visibility does not exist, or it is negligible. Civil society also ensures the development is not only taking place, but the development which is taking place is qualitative and also cost effective in nature. और बेहतर तरीके से रिसोर्सेस को मैनेज किया जा सकता है बाय सिविल सोसाइटी. These are the three effective advantages of civil society over the state. स्टेट और सिविल सोसाइटी में कभी डेवलपमेंटल वर्क को कंपेयर किया जाए तो सिविल सोसाइटी के ऐसे 3 सूत्र हैं फ्रॉम पॉल स्ट्रीटन्स पर्सपेक्टिव which is adding advantageous, which is bringing civil society in advantageous positions when compared to the state organizations. और सिविल सोसाइटी क्यों ज्यादा बेहतर है? बिकॉज ऑफ दीज 3 propositions. अब क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी, हमने इनको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा है जिससे एक ही स्कॉलर से 3 कंट्रीब्यूशन आपको निकल के सामने आ जाए. एवरी बच्चा इज विथ मी टिल हियर that the role of civil society can be seen from that it helps in increasing the participations of people. It helps in making development much more cost effective and efficient. And it also ensures that the civil societies makes the government, increases the visibility of government even in the pockets where the government's wit or the will does not exist or exist only in a very superficial manner. लेकिन अगर आपको और ज्यादा सिलेबस से कंटेंट इंक्लूड करना है, there are lot many scholars who have talked about the role of civil society. Remember Paul Streeton basically for one reason, that I am pretty much sure that in the examination condition you would not able to remember these scholars. शायद एग्जाम में ये सारे के सारे तुम्हें याद नहीं आएंगे, और जब एग्जाम में याद नहीं आए तो दिक्कत नहीं हो, इसलिए पॉल स्ट्रीटन अकेला ही तुम्हें सोशियोलॉजिकली लिखने का एस्पेक्ट बता देगा, हाउ यू शुड अप्रोच द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी. नाउ फर्दर लुकिंग इनटू द रोल ऑफ और कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द सिविल सोसाइटी, there are different sociologists who have discussed that how important the civil society plays its role and how important these organizations are for both democracy and development in 21st century. Shall I start? Guys, shall I start this? Okay. पॉल स्ट्रीटन के बाद में सिर्फ एक स्कॉलर याद रह जाए बहुत है मेरे लिए. 2 स्कॉलर याद रहे, एक आंसर में मोर देन सफिशिएंट. इसके बाद में एक और तरीका बताऊंगा कि सिलेबस को कैसे यूज किया जा सकता है. फॉर दैट आई अनम्यूट समवन हियर. देयर आर डिफरेंट स्कॉलर्स हु हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी. लेट्स लुक इनटू द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी जो मैकेन बोलते हैं. अब यहाँ पे 2 स्कॉलर मैं यूज करूंगा, ध्यान से समझिएगा. According to McCain, civil society is invisible government. According to Robert Putnam, civil society acts as school of democracy.
कि सिविल सोसाइटी है जहां पे तुम डेमोक्रेसी के फर्स्ट प्रिंसिपल समझते हो। ठीक, अब इन दोनों की अपने अपने स्टेटमेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू सिविल सोसाइटी, बट दोनों कहीं ना कहीं बात एक ही तरीके की कर रहे हैं। कैसे? सिविल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, वो स्कॉलर भी लिखा है, सबको एक बड़ी जितने पॉसिबल है एक साथ इंटीग्रेट करके पहले एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। सिविल सोसाइटी प्रोवाइड्स एक्सपर्ट ओपिनियन. Many times the government of India often relies on the data provided by civil society in order to frame the right policies. अब कई बार देखते हो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट जो हैं, कोई ड्राफ्ट बिल बना रहा है, कोई पॉवर्टी के ऊपर स्टडी कर रहा है, वो डेटा दे रहा है जो पॉवर्टी बीपीएल के बेसिस बन जाती है. Different people, this civil society consists of an intellectual wings. They are the people who are social workers, experienced public servants, retired one, or maybe they themselves are of intellectual order. They have the expertise of the topics upon which they are working or the issues upon which they are working, be that the issue of labors, be that the issue of gender, be that the issue of equality, or be that the issue of poverty or policy making or public affairs or corruption. These people, since they are expert and they are very much connected to the ground realities, their expert opinion becomes the basis for government's policy formulation. Every bacha is with me till here. That civil societies provide the right expertise and data, which this data becomes the basis for the policy formulation of government, as many of these policies of the government are based upon the empirical evidences which are often collected by the civil societies, NGOs and pressure groups, whose data is then provided to these people, and on the basis of which they often make or base their schemes. Since the government policy is based upon the data provided by the civil society or the expertise provided by civil society, it is often said that civil society acts as legislature behind legislature. I'll repeat. Because the policy is based upon the data provided by the civil societies are considered as legislature behind legislature. This makes civil society a school of democracy. This makes McCain to say that civil society is invisible government. Have you connected the 3 points together in a single paragraph? The important contribution of civil society can be seen from the fact that civil society, because of its expert knowledge and awareness, often acts as the base for policy formulations. And since government often base their policies on the data and expertise of the people belonging to the civil society world, it would not be futile to say that civil society is legislature behind legislature,
It acts as a school of democracy, and many times some scholars like McCain often refer to them as the invisible government themselves. कि reality में यही सरकार है, बट वो इनविजिबल है क्योंकि वो लेजिस्लेचर के पीछे के लेजिस्लेशन देखती है कि जिस पे तुमने लॉ बनाया उसका जो बेस है वो सिविल सोसाइटी से रेडिएट होते हुए दिखाई देता है. फॉर दैट मैटर प्लानिंग कमीशन ले लो या फॉर दैट मैटर नीति आयोग ले लो, दोनों के अंदर स्पेसिफिक विंग्स है फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप्स एंड एनजीओ. ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली बहुत सारे सिविल सोसाइटीज और प्रेशर ग्रुप्स के ओपिनियन को कंसीडर करती है. एंड्रे बेतले जो आपके सोशियोलॉजिस्ट है वो प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर थे. क्लियरली शोकेसिंग द लिंक बिटवीन the civil society and the government mechanisms. पहला पॉइंट क्लियर है. The contribution or the role of civil society with respect to how the civil society helps in making the policies which are more people centric, citizen centric, efficient in nature. सेकेंड पॉइंट पे बढ़ूं तो पहले में मैंने कवर कौन कौन सा किया? मैकेन, स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ अमर्त्य सेन. आप चाहो तो पॉइंट वाइज लिखो, लेकिन पॉइंट वाइज लिखने से एक एक स्टेटमेंट को बहुत एलॉबरेट करना पड़ेगा. टेक्निकली दोनों का पॉइंट एक था, मैंने इससे बेस बताया फिर इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया. कमिंग टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, पॉलिसी मेकिंग में हमने इन तीनों को यूज किया. अब आते हैं द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी विथ रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी. सिविल सोसाइटी कैसे डेमोक्रेसी को और बेहतर बनाती है. अब इधर मैं यूज करूंगा एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, बिकॉज इंडिया वाले चैप्टर में भी है, पेपर 2 में भी है, सुदीप्त कविराज. बट इसके लिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बैठाएंगे. Civil society helps in, if you remember the types of civil society, there was one specific civil society which was right based organizations. Civil society, especially the right based organizations, ensures political socialization. That is, it makes people aware of their rights, and this awareness of their rights helps them in becoming active citizens of the society. के यही राइट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, सिविल सोसाइटी बार बार आपको अपने राइट्स के बारे में अवेयर करेगी. And because of this awareness, you will become much more active politically. And once you become this political socialization, would do two things. चलो थोड़ा सा और कनेक्ट कर रहा हूं, मस्त वाला. Political socialization मतलब it will make you aware about your rights awareness. It will make you aware about your rights. यहां पे हमने यूज किया सुदीप्तो कविराज. नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. Civil societies, by making people aware about their rights, ensures political socialization. And this political socialization in turn have ripple effect
on the quality of democracy in the society. It has an effect on the quality of democracy. कैसे? अगर एक समाज के अंदर लोग राइट्स के बारे में अवेयर है, तो वो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी से क्या लेना देना रख रहा है? इसके लिए हम यूज करेंगे हैबरमास। हैबरमास को आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस हियर that this political socialization ensures or has an impact on the quality of democracy. But the question is how? इसके लिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हैबरमास ने अपने सिटीजनशिप की थियरी में, आगे जब सिटीजनशिप का टॉपिक आएगा तो हैबरमास वापस नहीं करूंगा मैं, अच्छे से समझना है यहाँ पे। हैबरमास से पहले ये माना गया था, स्कॉलर्स लाइक जॉन स्टुअर्ट मिल, ये लिप्सेट एंड बेंडिक्स, सब लोग तो क्या मानते थे, साहब सिटीजनशिप अगर सबको दे दोगे आप, इक्वालिटी आ जाएगी। If the citizenship is given to all, the society would be equal because everybody would have the same categories of rights, everybody would have the same nature of duties. Therefore, society is equal. Habermas counter-attacked this concept. He opined that no, wait. I understand that if you give citizenship to all, that's a good thing. But giving citizenship to all does not mean that all would use the citizenship in the same manner. अरे सिटीजनशिप मेरे पास भी है, सिटीजनशिप अंबानी के पास भी है, सिटीजनशिप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास भी है, आपके पास भी है, वो रिक्शे वाले के पास भी है। क्या सबको ही अपने सिटीजनशिप, आईएएस ऑफिसर के पास भी है, क्या सबको ही अपना सिटीजनशिप उतना ही यूज करते हैं, बराबर से यूज करते हैं? What is your opinion? All of us have citizenship, but are we using our citizenship in the same manner? And if we are not using our citizenship in the same manner, then how the hell citizenship would bring equality in the society? It may technically create a new form of inequality. कैसे भाई साहब? हैबरमास सिटीजनशिप की थियरी में बोलते हैं there are 3 types of citizens. Supra citizens, very important scholar. सिटीजनशिप वाले टॉपिक में भी आता है, डेमोक्रेसी में भी आता है, सिविल सोसाइटी में भी आता है, और कोई भी बड़ी बात नहीं है। किसी दिन यूपीएससी ने पूछ लिया हैबरमास थियरी ऑफ सिटीजनशिप, क्यों? उसने पूछा है मार्शल की थियरी ऑफ सिटीजनशिप, उसने पूछा है अभी लास्ट ईयर एंड्रे बेतलेस क्लास एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हैबरमास को सीधा 10 मार्क कर पूछ ले वो। हैबरमास बोलते हैं प्रोवाइडिंग सिटीजनशिप टू एवरीबडी डज नॉट नेसेसरीली एंश्योर इक्वालिटी, as the rights of citizenship can exist with every section of the people, but every section of the people does not use the citizenship right in an equal manner. Why not equal manner? knock. हैबरमास साहब ऐसा कैसे बोल रहे हो आपकी इक्वल मैनर में नहीं है? तो हैबरमास बताते हैं भैया दुनिया में 3 टाइप के सिटीजन्स होते हैं, सुप्रा सिटीजन्स, सब सिटीजन्स एंड इंफ्रा सिटीजन्स। याद रखना, according to Habermas, there are 3 types of citizens present in any society: supra, sub and infra citizens. Supra citizens are those citizens who makes full use of their rights. अपने राइट्स का फुल फ्लेज्ड यूज करते हैं, हर बार अपने राइट्स को असर्ट करते हैं। अब इधर कौन लोग आ सकते हैं? ब्यूरोक्रेट्स आ सकते हैं,
इंटेलेक्चुअल्स आ सकते हैं, या फिर एक इलीट्स ऑफ द सोसाइटी आ सकते हैं जो अपने राइट्स का, अधिकारों का फुल यूज करेगी, यथा जहां तक संभव हो हर बार अपने राइट्स को असर्ट करेंगे। सब सिटीजन्स आर दोज पीपल who only use their citizenship right in exceptional circumstances. ये वो सिटीजन्स है जिनके पास सिटीजनशिप है जैसे इनके पास है, लेकिन ये वाले लोग हर बार अपने सिटीजन राइट्स का यूज नहीं करते हैं। दे ओनली यूज देयर राइट्स इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्या बोले हैबरमास ने? That some citizens would exercise their citizenship right only when their existence is questioned or threatened. कि जब मेरे ही एग्जिस्टेंस पे बात आ जाएगी तब मैं मेरा यूज करूंगा सिटीजन लेना देना। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास कम्स अंडर दिस। ये मेरा एनालिसिस बता रहा हूं मैं। ज्यादातर आप और हम इस क्लास के अंदर आते हैं। अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई पुलिस किसी को हरास करते हुए दिखे, कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ते हुए दिखे, या कोई और ऐसी अनहोनी हो रही हो, चाहे टोल टैक्स के ऊपर ले लो, चाहे एक्स्ट्रा रेंट ले लो, या जबरदस्ती का टैक्स ले लो, या बिल नहीं देना दुकानदार सामने, छोड़ यार कौन इतना करेगा, छोड़ लीजिए। लेकिन जब खुद पे बात आ जाए तो फिर आप अपना राइट असर्ट करते हो। Is the second statement clear? Second type of citizens clear? Some citizens are those citizens who have the citizenship right but only use their citizenship right in the rarest exceptional cases. In a way, the Indian middle class can be considered as one of the social class which can completely be considered more or less falling in the categories of sub-citizens. Infra-citizens, according to Habermas, are those citizens who have the rights, but they are not even aware about the rights. इनके पास भी उतने ही सिटीजनशिप राइट है, लेकिन ये सिटीजन जो होते हैं इंफ्रा सिटीजन्स, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये राइट्स हैं उनके पास। Vulnerable sections like that of people belonging to particularly vulnerable tribal groups, PVTGs, scheduled tribe, many times differently enabled. I'm not saying every person, no. These are some of the examples जो शायद infra citizens पे fit हो सकते हैं, that they have the rights but they are more or less not aware about their rights. अब ये थियरी है सिटीजनशिप के ऊपर। हम क्या कर रहे हैं? सिविल सोसाइटी, since it ensures political socialization as highlighted by Sudipto Kaviraj, this political socialization converts infra citizens to supra citizens. And when the awareness of citizenship with citizens with respect to rights increase, the democracy becomes more deliberative in nature rather than remaining theoretical in nature. This is how Kaviraj and Habermas can be connected to explain a question on civil society's relationship with democracy. तो साइड में एक ब्रैकेट में लिख के देना तृप्ति, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी। कैसे सिविल सोसाइटी हेल्प्स इन मेकिंग डेमोक्रेसी मच मोर सब्सटेंटिव, डेलिबरेटिव, नॉट जस्ट ओनली मेकिंग इट एज थियोरिटिकल इन नेचर। कैसे करती है ये? सिविल सोसाइटीज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से राइट अवेयरनेस करती है, जिससे लोग सुप्रा सिटीजन्स बन जाते हैं, एक्सट्रीमली अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड यूजिंग देयर राइट्स। एंड इफ द पीपल स्टार्ट्स यूजिंग देयर राइट्स एंड असर्टिंग देमसेल्व्स, देन द डेमोक्रेसी ऑफ एनी सोसाइटी वुड ओनली एक्सपैंड इन इट्स विगर एंड वाइटैलिटी। हर बच्चा मेरे साथ यहाँ तक
दैट सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी में क्या रोल प्ले करती है। दो स्कॉलर हमने यूज किए, सुदीप्तो कविराज एंड हैबरमास। हो जाएगा। पहले सिविल सोसाइटी का रोल हमने देखा कैसे पॉलिसीज को ज्यादा बेहतर करती है, कैसे, और ये पॉलिसीज चाहे क्लाइमेट चेंज की हो, इक्वालिटी की हो, टेक्नोलॉजी की हो, एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, हर जगह लागू होगा। और कैसे सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी को ज्यादा बेटर कर सकती है। क्या है यार, इतना ज्यादा लेथर्जी क्यों है आज? चैट में कोई यस और नो का आंसर ही नहीं आता है। तो यहां तक हमने 5 स्कॉलर यूज किए। पॉल स्ट्रीटन को मैंने अलग से लिखा हुआ है, उसको मिला दूं तो 6 स्कॉलर। Coming to the last point, civil society, beside immensely contributing to the level of democracy in society and also to the policy formulations making development much more progressive in nature, civil society immensely also contributes in making development more inclusive in nature. इधर मैं यूज करूंगा मिहिर शाह। भारतीय सरकार ने इनकी एक कमेटी भी बनाई थी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन, कुछ थोड़ा टाइम हो गया यार, ये फुल फॉर्म देख लेना। 2 वाटर ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको कंबाइन करने की बात की जा रही थी, उस कमेटी को हेड किया था मिहिर शाह ने। तो मिहिर शाह का भी एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है सिविल सोसाइटी के ऊपर कि सिविल सोसाइटी ना के सिर्फ पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है, ना के सिर्फ डेमोक्रेसी की वाइटैलिटी सुधारता है, मेकिंग इट मच मोर इमर्सिव इन नेचर, बट सिविल सोसाइटी ऑल्सो हेल्प्स इन ensuring that the development which happens in the society is much more inclusive in nature. Mihir Shah opines that civil society helps in converting bureaucracy-led development to people-led democratic development. People-led development. कहने का तात्पर्य क्या करता है भाई सिविल सोसाइटी? मिहिर शाह कहते हैं कि जब सिविल सोसाइटी से पहले स्टेट डेवलपमेंट करता है तो इट इज द ब्यूरोक्रेसी विच डिटरमाइंस द डेवलपमेंट। वही पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी इंप्लीमेंट या पॉलिसी इवैल्यूएट या मॉनिटर करती है। अब जब सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन होता है इन पॉलिसीज में, जो हमने ऊपर ऑलरेडी देखा है, व्हेन सिविल सोसाइटी एंटर्स इनटू द डेवलपमेंटल एरिना और इन द पार्टिसिपेशन ऑफ डेवलपमेंटल वैल्यूज, तो होता क्या है, सिविल सोसाइटी इस डेवलपमेंट को हायरार्की से निकाल के पार्टिसिपेटरी बना देती है, जहां पे लोग पार्टिसिपेट करने लगते हैं उस प्रोसेस में। और जब डेवलपमेंट पार्टिसिपेटरी होने लगता है तो इसके अंदर such development would be considered as much more inclusive in nature. Why? When people themselves participates in the development would then take into account the interest of all the sections rather than the development only focusing upon the interest of certain caste, class, gender, ethnicity, language or regional identities. अब थोड़ा सा बड़ा वर्ड यूज करूंगा इसकी जगह, rather than just calling it as inclusive in nature, you can use the modern terminology of
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। थोड़ा सा करंट डायमेंशन ऐड करने के लिए मैं काफी यूज करता हूं सबका साथ एंड सबका विकास in different sociological theories. Therefore, Mir Shah opines that the civil society, when participates in the developmental framework, the development gets converted from bureaucratic-led development to people-centric, people-led development, and thus not only ensures inclusive development, but it also helps in ensuring a participatory development in the forms of सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास। ब्यूरोमेनिया मुझे नहीं पता भाई ये क्या टर्म है। ब्यूरोमेनिया तो मैंने पहली बार सुना है। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज ब्यूरोमेनिया। प्लीज बताओ बिंदु, मुझे भी पता तो चले ब्यूरोमेनिया क्या होता है। I'm not sure. There are multiple terms which I have no idea of. Okay, बिंदु, ठीक है, अगर आपको लग रहा है वो उससे कुछ रेलेवेंट है ब्यूरोमेनिया, प्लीज गो अहेड। अब एक को अनम्यूट कर रहा हूं मैं। एनीबडी हु वांट्स टू रेज द हैंड? एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी इज ब्यूरोमेनिया। ओके, ठीक है, चलो तारुष को ही कर लेते हैं। बिंदु और आरती का नेटवर्क रेड दिखा रहा है इधर। तारुष, आर यू देयर? Yes, sir. Am I audible, sir? Okay, yes, you are audible. समझ में आया द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी? Yes, sir. अब एक छोटा सा क्वेश्चन, जस्ट फॉर माय जनरल नॉलेज सेक, आई वांट टू नो वेदर यू नो दिस और नॉट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सबका साथ एंड सबका विकास? Sir, I don't think there is a difference because सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास is you said कि you can use this term instead of that. Right, I mean, is there any difference? Sir, I don't think so, sir. Yes, there is a big difference. Big difference. Inclusive development or inclusive progress or inclusive growth, if you see, it talks about development of all, right? Yes, sir. That can happen without participation of all. Yes, sir. Yes, sir. सबका साथ, participation of all, सबका विकास, development of all, and सबका विश्वास अब ऐड कर दिया गया, trust of all. All are Yes, important not just in development but even in the participation. तो सबका पार्टिसिपेशन भी होना जरूरी है। सो आप किसके साथ जाओगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट या सबका साथ सबका विकास? सर सबका साथ सबका विकास बिकॉज सबका विश्वास। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज a narrow term. I may develop because of the contribution made by the Ambani for the larger progress in the society, but that contribution would not have developed the capacities in me. सबका साथ सबका विकास में क्या होता है, everybody participates, and this participation of everybody would ensure more vitality not only in the process of development, but it would also develop those personalities to the fullest level because of their participation in the process of development. Got the point? Yes, sir. अभी शायद सोशो में नहीं आए, पेपर 2 गवर्नेंस या पेपर 4 एथिक्स में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, or something related to this particular aspect. So are you clear with the contribution and the role of civil society starting from Paul Streeton, Mir Shah, Habermas and others? सारे scholars clear हैं कि रोल कैसे लिखना है? Yes, sir. मान लो तुम्हें सारे स्कॉलर भूल गए तो कैसे लिखोगे? सर फिर पॉल स्ट्रीटन वो भी भूल गए। सर आप बोले थे सिलेबस से आप बताएंगे, तो फिर सिलेबस को यूज करना पड़ेगा तुम्हें। यस सर। अब ये बात हमेशा याद रखेंगे, सिलेबस हमेशा तुम्हें कहीं फंसने नहीं देगा। If you forget every scholar, you still have the capacity to write super flawless sociological answers, provided you just open up your mind and go to the various, reach out to the various chapters present in your paper 1 or paper 2. Got the point? Yes sir. अब पहले जो ब्रिटिश सोशियोलॉजी के जर्नल के अंदर आया उसका एक समरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं।
ये पॉइंट्स अलग से लिख के रख लेना, विद द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और प्रेशर ग्रुप में ये सारे पॉइंट्स भी काम आ सकता है। सोशोलॉजिस्ट का नाम है Yes, sir. शिल्पा एंजल। द स्टडी वॉज ऑफ इर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो चलेगा, केरला। अब इन्होंने क्या रोल बताया, ये सिर्फ मेजर पॉइंट याद रहने चाहिए आपको, क्लाइमेट चेंज से लेना देना नहीं है, दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड, ठीक है। Yes, sir. ओके, ईरा नक्यू ये एलेवर, ये क्या है यार नीरज? चलिए, मैं कुछ पॉइंट्स इससे हाईलाइट करके रख रहा हूं, प्लीज डू राइट इट अप, ठीक। Yes, sir. सिविल सोसाइटी अब सपोज तारुष कल ये क्वेश्चन पूछ ले, Yes, sir. डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, तुम्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शिल्पा एंजल को याद रखना है कि हाउ सिविल सोसाइटी कैन हेल्प इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। क्यों? क्योंकि सेम आर्टिकल ब्रिटिश सोशियोलॉजी जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है ऑलरेडी। अब चाहे जीएस में आ जाए नाम हटा देना, सोशियो में आ जाए तो नाम के साथ लिख देना, these are the important contribution made by civil society with respect to climate change, but let's remove the word climate change. These are the important contribution which civil society makes. It helps in bringing, or it helps in developing the sense of ownership among the community. The failure of sense of ownership can be clearly seen. एक important program था सरकार का, community development program, that failed because the people could not take the ownership of the developed resources. पूरा program बैठ गया, पूरा program fail कर गया। ये सेंस ऑफ ओनरशिप एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू मेंटेन दोज रोड्स, दोज कैनाल्स, दोज वेल्स और दोज वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर एस्पेक्ट्स। दिस कैन बी build up, the sense of ownership can be built up by the various pressure groups and civil societies, which creates the we feeling of community, or which helps in creating what Max Weber calls as neighborhood relations. Second,
सिविल सोसाइटी हेल्प्स इन कैपेसिटी बिल्डिंग। इसके लिए तुम्हें याद है ना, हेबरमास ने खुद बताया है कि कैसे इंफ्रा सिटीजन जो है सुप्रा सिटीजन में कन्वर्ट हो सकता है। आगे Yes, इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग, सॉरी, इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। जो चेंज लाने की मुहिम होती है वो सिविल सोसाइटी ज्यादा बेहतर कर सकती है। कैसे? बिकॉज सिविल सोसाइटीज आर ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट बन जाता है सोशल चेंज का, स्पेशली इफ द चेंज इज इन द माइंडसेट। इधर सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्वच्छ भारत अभियान, पेट्रियार्की, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन एक्सेट्रा, जिसका माइंडसेट बदलने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितना इंपॉर्टेंट रोल सिविल सोसाइटी ने perform किया है in tackling the issues of child marriage, in tackling the issues of different types of other aspects. It helps in right resource allocations, जहां पे अभी हमने डिस्कस किया सबका साथ सबका विकास के रिसोर्सेज कभी भी elitist orientation नहीं रखेंगे. The resources can be better allocated in a more inclusive fashions by the civil societies. The resource allocations may have elite orientation if the state allocates the resources as the state is the agent of bourgeois or gets dominated by the elites of the society. Civil society, since being a grassroots people centric organizations, it helps in making sure that the resources are allocated in a more inclusive fashion and manner. The generate community led solutions. Civil society सबसे important role play करती है in the generation of innovations. एक भारत सरकार का टैगलाइन लिख रहा हूं यहां पे, you can use this. yes, sir. Helps in taking the product from lab to land. बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लैब में डेवलप होती है, लैब में रह जाती है, ठीक है, लेकिन Yes, sir. जब वो लैब से लैंड तक पहुंचती है तब जाके उसका ट्रू इंपैक्ट होता है। और ये लैब से लैंड तक पहुंचने के लिए क्या होता है, एक फियर का कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोला जाता है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। XYZ डेवलप किया गया और ये ABCD यूज करते हैं। अब Yes, ये sir. XYZ अगर यूज करवाना है इसे, तो इसके माइंडसेट में एक चीज है जिसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी Technology एमनीसिया। amnesia. ठीक है, वो सॉरी रेड वाला दिख नहीं रहा है शायद, टेक्नोलॉजी एमनीसिया। ठीक, अब ये Yes, क्या sir. होता है, दिस रेफर्स टू फियर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये फियर ऑफ टेक्नोलॉजी निकालने के लिए इस आदमी का माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, और ये माइंडसेट चेंज करने के लिए सिविल सोसाइटी सबसे ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है। गॉट इट? Yes, sir. दिस इज हाउ यू यूज द कंटेंट। मैंने सिर्फ एक स्कॉलर उठाया, मैंने मेरे सिलेबस के अंदर चीजों को यूज किया, GS के करंट को थोड़ा सा यूज किया। एक स्कॉलर में मल्टीपल स्कॉलर्स फिटेड टुगेदर। आ गया क्लियर? Yes, sir. मान लो अब तुम अंकित शिल्पा एंजल को भी भूल गए, अब इतना सब कुछ भूलोगे तो कैसे चलेगा, Yes, sir. राइट? फिर भी मान लेते हैं भूल ही गए हैं हम, तो एक और तरीका है सिलेबस से आंसर कैसे निकाला जाता है। Yes, sir. हर चैप्टर से एक पॉइंट उठाना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट फोकस ऑन सिंगल चैप्टर। हाँ, देयर कुड बी मोर पॉइंट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर, but beyond that you should try to get as many points from as many chapters as possible. Suppose, what is the role of civil society and inequality? Chapter has stratification. Stratification. Yes, sir. सिविल सोसाइटी कैसे एक्सक्लूजन्स को खत्म कर सकती है। गॉट इट? Yes, sir. कई बार सिविल सोसाइटी एक्सक्लूजन बढ़ा सकती है। Yes, sir. सिविल सोसाइटी एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन। Yes, sir. Chapter 6. सिविल सोसाइटी आने से पहले स्टेट का काम करने का तरीका कैसा था, और सिविल सोसाइटी क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बिल्डअप करती है, इट हैज चेंज द नेचर ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन विद इन द स्टेट। यस और नो? Yes, sir. सिविल सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट, डेमोक्रेसी,
सिटीजनशिप, नेचर ऑफ पावर, ये सारे के सारे एस्पेक्ट है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, रीजनलिज्म, ये सारा का सारा एस्पेक्ट है आपका चैप्टर पावर एंड पॉलिटिक्स से। एक चैप्टर में ही कम से कम 8 पॉइंट मिल जाएंगे, अगर पूरा चैप्टर उठाऊंगा हर जगह सिविल सोसाइटी फिट होगी। यस सर। आगे जाए, सिविल सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म, उससे आगे जाए, सिविल सोसाइटी एंड द फैमिली एंड किनशिप एस्पेक्ट। कैसे सिविल सोसाइटी जो है, कुछ कुछ सिविल सोसाइटी है जो फैमिली और किनशिप पे बेस्ड होने के कारण, याद है, नॉन एसोसिएशनल ऑर्गेनाइजेशंस या प्रेशर ग्रुप्स, यस सर। हाउ दोज प्रेशर ग्रुप्स कैन हेल्प इन better strengthening these values, but at the same time strengthening of values on the basis of kin, caste or gender criteria can largely have wrong impacts on the inclusive nature of the development or civil society and social change। अब इसके चैप्टर 2 पेपर 2 में जाऊं तो एंड ही नहीं है पॉइंट। सिविल सोसाइटी एंड ट्राइब, सिविल सोसाइटी एंड कास्ट, सिविल सोसाइटी एंड एग्रेरियन डेवलपमेंट, सिविल सोसाइटी एंड स्लम डेवलपमेंट, सिविल सोसाइटी एंड वुमेन वायलेंस, सिविल सोसाइटी एंड एस्पेक्ट्स रिलीजन, और वो वाले चैप्टर छोड़ दें तो सिविल सोसाइटी एंड मिडिल क्लास, सिविल सोसाइटी इन वुमेन्स मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, आइडेंटिटी मूवमेंट। इट इज नेवर एंडिंग फ्रीक, चलता चले जाएगा सिविल सोसाइटी का रोल, क्योंकि हर क्षेत्र में सिविल सोसाइटी ने रोल प्ले किया है। चाहे सिविल सोसाइटी एंड लॉ हो, सिविल सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी हो, सिविल सोसाइटी एंड एजुकेशन हो, तीनों सिलेबस में मेंशन्ड है। सिविल सोसाइटी और क्लाइमेट चेंज तो अभी आपने देखा है। सिविल यस सोसाइटी सर। इस तरीके से हर एक स्पीयर के अंदर रोल प्ले करती है। आपको कोई भी 4-5 पॉइंट सेलेक्ट करके, 2 पेपर 2 से, 2 पेपर 1 से, यूज दोस कंटेंट इफ यू फॉरगेट ऑल द स्कॉलर्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। क्लियर? यस सर। कोशिश करना कि एटलीस्ट 5 पॉइंट आज क्लास के बाद बैठ के आप सिलेबस से लिखने की कोशिश करो, बिकॉज मेरा बोलना एक तरीका है, बिकॉज इसको डिस्कस करने जाऊंगा अनदर 2 आवर्स कैन बी स्पेंड हियर, but try to write a good point, not just the relationship। मैंने आपको जस्ट डिमेंशन बताया। आप बैठ के सोचो कि सिविल सोसाइटी और कास्ट में क्या टाइप का रोल प्ले किया सिविल सोसाइटी ने, कोई ऐसा एग्जांपल है? सिविल सोसाइटी किस तरीके से फैमिली वैल्यूज के ऊपर इंपैक्ट करती है, क्या कोई एग्जांपल है? सिविल सोसाइटी कैसे आइडियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल या टेक्नोलॉजिकल चेंज लाती है? डू यू हैव एनी एग्जांपल? What has been the role of civil society in spreading the education in Indian society? Try to, try to write these points. आधा घंटा देना, brainstorm on these issues and you would never forget those issues. Done, Tarush? यस सर। Okay. आगे बढ़े। यस सर। अब सिविल सोसाइटीज और प्रेशर ग्रुप्स बहुत इमेंसली कंट्रीब्यूट करते हैं इन मॉडर्न सोसाइटी, एज सीन फ्रॉम द एंटायर डिस्कशन ऑफ 1.5 hours। बट if you look into the civil societies also have certain negative roles, और वो नेगेटिव रोल्स के लिए तुम्हें ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा मोराइज डिवोर्चर का, राइट? यस सर। क्या बोलते हैं मोराइज डिवोर्चर? कितनी ऑर्गेनाइजेशंस है? सर याद नहीं सर। क्या किया 4 दिन? सर ये स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ रहा था सर। ओके, चलो कोई बात नहीं। सर डिफाइन स्ट्रैटिफिकेशन। so stratification is a so stratification is higher. So just a second, sir. Stratification is basically defining people and ranking them on the basis of their social. Uh, so stratification is ranking of individual or social group in a particular social hierarchy. कितने सेकंड्स लगे आपको? और सर वो भी अचानक से नहीं है। सर अचानक से थोड़ा नर्वस हो गया था सर।
अचानक से नर्वस हो जाओगे तो सडनली अचानक से शॉकर क्वेश्चन आएगा पेपर में तो ब्लैकआउट ही हो जाएगा। फिर आपको क्या Yes, लगता sir. है? पिछले 1.5 घंटे से मैंने सिर्फ रोल डिस्कस किया, मैंने सिर्फ 3 स्कॉलर डिस्कस करने थे, आगे बढ़ जाता, कोई ये नहीं कह सकता था मैंने कवर नहीं किया। हो गया। मैंने आपको ब्रिटिश जर्नल 2024 का भी डिस्कस करके बताया, सिलेबस भी यूज करके बताया, थिंकर्स भी इतने दिए कि तुम्हें हद हो जाएगी, पर फिर भी रिवाइज नहीं है तो फिर क्या फायदा है यार? वो क्या लगता है ऐसे याद रहेगी ये चीजें? नहीं, 100% नहीं रहेगी। चलिए ठीक है, नो इश्यूज। पहली बात तो गैब्रियल एलमंड ने ये क्लासिफिकेशन दिया था, मॉराइस डूवर्जर का नहीं था। आप में से किसी ने नहीं बोला मुझे ये, सब चार 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 बोलने लगे। कुछ टाइप की सिविल सोसाइटीज होती है जो कहीं ना कहीं रोल तो प्ले करती है, लेकिन एक डिसफंक्शनल रोल प्ले करती है। गॉट इट तारुष? Yes, sir. Civil societies have not always played a positive role, whether be that with respect to democracy's expansion or be that with their developmental orientations or goals. Some categories of civil societies have played functional role, yet another civil societies, because of their intrinsic features based on primordial identities, have many times made the development as its victim. Rather than expanding the spirit of democracy, it have largely made democracy more an elitist phenomena. कैसे? कई बार सिविल सोसाइटीज अगर ऐसी हो, एनोमिक प्रेशर ग्रुप्स या सॉरी नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स, एसोसिएशनल लिख दी है मैंने, गाइस ये याद रखना, नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स which are based upon kinship values and primordial identities. Sometimes civil societies may be based on associational or institutional values, but those civil societies may themselves not have internal democracy. Those civil societies themselves may be dominated by the elites of the society. In such circumstances, civil society, as highlighted by Karl Marx, act as the spokespersons of the bourgeois. हालांकि मार्क्स स्टेट के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ पे bourgeois यूज कर रहा हूँ। गाइस गिव मी वन मोमेंट। Yes, sir. Sometimes the civil societies may be dominated by some elite sections. In such circumstances, rather than civil society working for the well-being of the citizens, the civil society more or less may largely become the spokespersons of the elites. और इन circumstances में क्या होता है तारुष and others कि civil society लोगों के हित की जगह कुछ sections के हित के interest के लिए fight करने लगती है। और इन circumstances में होता यह है कि कई बार rather than bringing the development which is people centric, they themselves largely becomes the hurdle for development. What the point? Yes, sir. Recently ऐसा कुछ हुआ था क्या? Sir, recently I'm not aware of that. वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो थोड़ा सा मैं भी भूल रहा हूँ यार। पीएल, केरला के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके Yes, अंदर बाहर से पैसे आते थे और वो रेडिकलाइजेशन के लिए यूज किए जा रहे थे। yes, sir. आपने सर एक दिन क्लास में बताया था सर. हाँ, वो एक, इसका नाम मैं भूल जाता हूँ यार, ये जाकिर हुसैन की ऑर्गेनाइजेशन थी। एंड Yes, व्हाट हैपेंस, ऐसी सिविल सोसाइटीज डेवलपमेंट लाने की जगह डेवलपमेंट को ही विक्टिम बनाना स्टार्ट कर देती है। And not just one organizations, there are multiple plethora of organizations who in the name of development are actually making people the victims of underdevelopment. वो unnecessary state को oppose करती है,
क्योंकि शायद उनके लॉबिंग के इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होते, और उसके कारण कई बार लोगों को रॉन्ग दिशा दिखा देती है, एंड मेकिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट अ मोर ट्रबलसम एक्सरसाइज. The dysfunctional role of civil society may not be easily understood from the overall patterns of civil society as seen here in the 3 points. The dysfunctional aura of civil society would be better understood when we look into the next slide of characteristics of civil society or pressure group in India. रामचंद्र गुहा से मैं स्टार्ट करूंगा. Yes, sir. रामचंद्र गुहा का नाम सुना है? Yes, sir. रामचंद्र गुहा ने इंडियन सिविल सोसाइटी और वेस्टर्न सिविल सोसाइटी को कंपेयर किया, और उन्होंने बताया कि वेस्ट के अंदर जो सिविल सोसाइटी हैज एबल टू अचीव सच ए मैग्निफिसेंट रिजल्ट, व्हाई द सेम नेचर ऑफ रिजल्ट वाज नॉट अचीव्ड बाय द इंडियन सिविल सोसाइटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. And Ramchandra Guha says one of the primary reason for the underachievement of civil society in the Indian society when compared to the Western world is because in India there is low participation of people within the civil society. समझ में आया? Yes, sir. मतलब क्या है इसका? रामचंद्र गुहा कहना क्या चाहते हैं? सर ये कहना चाहते हैं कि इंडिया में पीपल पब्लिक. हेलो, एक सिविल सोसाइटी जो होती है. सर एम आई ऑडिबल? या नाउ यू आर ऑडिबल. मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बीच में वॉइस चली गई थी. सिविल Yes. सोसाइटी की जो स्ट्रेंथ है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है ऑन द नंबर ऑफ इट्स मेंबरशिप. कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या इससे जुड़े हुए हैं. जितना Yes. ज्यादा लोग जुड़े हुए होंगे उतना हाई इनका कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर होगा. राइट? Yes, sir. अब रामचंद्र गुहा बोलते हैं कि वेस्ट के अंदर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसके कारण सिविल सोसाइटी का बार्गेनिंग पावर विथ रिस्पेक्ट टू हैंड इन हैंड विथ स्टेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. बट इंडिया के अंदर सिविल सोसाइटी के अंदर लोगों का उतना बड़ा पार्टिसिपेशन ही नहीं है, एंड एज अ रिजल्ट सिविल सोसाइटी कभी भी वो एक डीप इंपैक्ट नहीं छोड़ पाया इंडिया में, द टाइप ऑफ इंपैक्ट विच दीज सोसाइटीज वर एबल टू पुट अप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड. तो ये इस स्लाइड में मैं डिस्कस कर रहा हूं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स और सिविल सोसाइटीज विद इन इंडिया. इंडिया में ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर पाई बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन. ये फीचर्स के कारण द नॉट ओनली द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी बिकेम लिमिटेड, बट समटाइम्स द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी बिकेम मोर नेगेटिव इन नेचर. सबसे पहला फीचर ऑफ सिविल सोसाइटी और प्रेशर ग्रुप इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, पहला है पॉलिटिसाइजेशन. इन इंडिया द सिविल सोसाइटी एंड दो कॉमन फीचर्स मैं एक साथ डिस्कस कर लेता हूं, पॉलिटिसाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडिया. इंडिया में सिविल सोसाइटी एक्सट्रीम लेवल पे कॉर्पोरेटाइज हो चुकी है या पॉलिटिसाइज हो चुकी है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तारुष? सर कैन यू प्लीज रिपीट? आपकी ऑडियो पॉज हो गया था. In India, the civil society is strongly corporatized or politicized. What it means? Sir, it means that in India, the civil society is heavily into corporates and politics. No, 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 no. सिविल सोसाइटी या तो किसी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से अटैच्ड है या Yes, तो sir. किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से अटैच्ड है. Yes, sir. Got it, sir. क्योंकि वो किसी चीज से अटैच होती है तो कभी भी ये न्यूट्रल नहीं रह पाएगी, कभी भी ये पीपल सेंट्रिक नहीं बन पाएगी. क्यों? कुछ इश्यूज जो लोगों के लिए अच्छे हैं लेकिन कॉर्पोरेट के लिए खराब है, उनको कभी भी ये वाउच नहीं करेगी, कभी भी वोकल नहीं होगी उनके ऊपर. टेक एन एग्जांपल. If a civil society is sponsored by a company called as Nirma,
And if that Yes, sir. plant of Nirma is polluting the water of a particular river around the plant, a civil society, since it would be strongly funded by this organization of Nirma, it would never fight for the interest of the locals who are getting impacted because of the unclean water or sewage discharge. It would rather justify the unclean water by highlighting that, see how Nirma is providing you the jobs. Why don't you focus on the jobs? और आज से Yes, sir. तकरीबन 2 साल पहले निरमा प्लांट जो गुजरात में है उसके अगेंस्ट में लोगों ने फिर मुहिम उठाई, मूवमेंट किया है, पीपल्स मूवमेंट हुआ, बिकॉज एंड इन दिस मूवमेंट इट वाज फाउंड आउट कि सिविल सोसाइटी निरमा प्लांट को सपोर्ट कर रही थी। ये देखो आप लोग क्या करोगे, आपकी बेरोजगारी, ये देखो इतना डेवलप किया, ये रोडें बनी है, सड़कें बनी हैं, लेकिन वो बेसिक कम्युनिटी जो प्रॉब्लमैटिक थी, जो हेल्थ कंसर्न्स लेके आ रही थी, सिविल सोसाइटी कंप्लीटली डिड नॉट इवन कंसीडर दैट इशू। वैसे ही सिविल सोसाइटीज कई बार पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होने के कारण दे कैन नॉट एक्ट इन अ न्यूट्रल फैशन। Therefore, Sir, corporatization of civil society and politicization of civil society have many times impacted the participation of people in these civil societies, as the people often lose trust on the organizations often sponsored or attached to a political parties or maybe to a corporate entity। बताओ। सर, पोलिटिसाइजेशन के बगल में आपने क्या लिखा है सर? यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, अखिल भारतीय विद्या परिषद, एवीवीपी, ओके सर। स्टूडेंट यूनियन। जब मैं यस, कैंपस लॉ सेंटर में गया था, यू विल नॉट बिलीव, इट्स ऑलमोस्ट 12 years डाउन द लाइन, मोर देन दैट, 13-14 years, यस सर। 11 14 years near about। If you look, that time the Indian National Congress was in the power at the center। यस और सर। जब आप अपने कॉलेज का, मैंने जब मेरे कॉलेज का माहौल देखा, एवरीबडी वाज ईगर टू जॉइन नेशनल स्टूडेंट, एनएसयूआई, यस, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, एनएसयूआई, जो कांग्रेस से एफिलिएटेड है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। एवीवीपी का काउंटर खाली पड़ा रहता था, नोबडी वाज इवन गॉट देम रेडी टू जॉइन एवीवीपी। पता है क्यों? क्योंकि यस सर। एनएसयूआई कांग्रेस से एफिलिएटेड थी, कांग्रेस पावर में थी। आज जाओगे माहौल उल्टा दिखेगा, जेएनयू के अंदर भी एवीवीपी आ गई, नॉट दिस ईयर, लास्ट ईयर। यस सर। Saurav Kumar, I think, he was also a close buddy of mine. He bought AVVP by putting a case on Kanhaiya Kumar. He bought AVVP in JNU, which was near an impossible task. क्यों? Because the central parties many times, since those who are power, ये ऑर्गेनाइजेशन या तो लोग ज्वाइन उसके लिए करते हैं क्योंकि पावरफुल विंग के साथ जुड़ी हुई है, या फिर इग्नोर करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जोड़िया नहीं करना है। अब चाहे कितना बड़ा भी हिंदूवादी आदमी कैंपस लॉ सेंटर में जाता, अगर 2008, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13 तक, शायद वो एवीवीपी ज्वाइन नहीं करता, बिकॉज उसको कहीं स्कोप नहीं था इलेक्शन जीतने का वहां पे, इफ दे आर फाइटिंग द इलेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिटिसाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन होने के कारण सिविल सोसाइटीज का रोल वीक पड़ जाता है, क्योंकि लोग उन्हें लो ट्रस्ट सिस्टम मानने लगते हैं। गॉट द पॉइंट? यस सर। लेकिन शायद वेस्ट में सिविल सोसाइटी न्यूट्रल एक्टर के जैसे, न्यूट्रल एम्पायर के जैसे एक्ट करता था। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। यस सर। सिविल सोसाइटीज इन इंडिया डू नॉट हैव एनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। वो बार बार अपने पार्टियां बदलते रहते हैं, बार बार अपने इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, until the time you are not even true to the goals and objectives which you are fighting for. People would never have trust in you if you keep on shifting your ideological commitments. Got it? यस सर। यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मीन्स। अब यहाँ पे आधा पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। सिविल सोसाइटीज टुडे आर नॉट जस्ट यूजिंग द ट्रेडिशनल मैकेनिज्म्स, बट दे आर ऑल्सो यूजिंग द मॉडर्न मैकेनिज्म्स ऑफ लॉबिंग। ट्रेडिशनली यस जो सर। आइडेंटिटीज यूज की जाती थी वो कास्ट, एथनिसिटी, रिलीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा, ट्राइब्स, ट्राइबल आइडेंटिटीज।
The mechanisms of traditional identity based civil societies is still prevalent, where the organizations are functioning on the basis of their identities, but at the same time there is a fast rise of associational pressure groups and civil societies who are formed on the basis of professional identities, who undertake activities like that of lobbying, electioneering and petitioning. सो ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स को कंबाइंड तरीके से यूज करती है सिविल सोसाइटी। शायद ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इंडियन सिविल सोसाइटी का कि दोनों का मिश्रण है, ना सिर्फ ट्रेडिशनल या ना सिर्फ मॉडर्न। गॉट इट? यस सर। मोर यूजेस डायरेक्ट एक्शन। एक इंडियन सिविल सोसाइटी में I'm टेक्निकली नॉट श्योर ये प्रॉब्लम है कि नहीं, बट लोग बोलते हैं इसलिए मैंने लिखा है। यू नो अगर आप वेस्ट में सिविल सोसाइटीज देखोगे, वेस्ट के अंदर सिविल सोसाइटीज आर वेरी एग्रेसिव विथ रिस्पेक्ट टू देयर ऑब्जेक्टिव्स, और उसके लिए वो बहुत ही डे टू डे बेसिस पे एक डायरेक्ट एक्शन यूज करते हैं। डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या है? पिकेटिंग, प्रोटेस्ट, मूवमेंट, बंद, हड़ताल, ऑल दोस थिंग्स। गॉट इट? यस सर। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया की सिविल सोसाइटी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे डायरेक्ट एक्शन, बात बात पे डायरेक्ट एक्शन यूज कर देती है। अब टेक्निकली फ्रॉम माय पर्सनल व्यू पॉइंट, you can avoid this if you want. I personally believe सिविल सोसाइटी और डायरेक्ट एक्शन के अंदर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है यार। सिविल सोसाइटी शुड always, you know, they are considered as grassroots organizations. अब सिविल सोसाइटी जिसके अंदर पार्टिसिपेशन उस लेवल पे नहीं है, तो शायद वो हमेशा डायरेक्ट एक्शन ही लेगी। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस चलो पॉलिटिकल पार्टी बन गई बाद में जाके 1885 में, उससे पहले जितने लीडर्स थे वो एक सॉर्ट ऑफ सिविल सोसाइटी के थ्रू जैसे काम करते थे। देयर गोल वाज नॉट टू कैप्चर द पावर, or in fact in the initial phase also Indian National Congress, despite formation in the 1885, it was not purely a political party, as the goal was not to capture the power, the goal was to increase the representation of Indians in the power, not to capture the power. Initially we see the Indian national movement strongly became successful because of the use of direct action. प्रोटेस्ट करना, पिकेटिंग करना, स्वदेशी, दर्शना सत्याग्रह, ये वो 50 चीजें हुई। अब इन द रिसेंट टाइम पीपल हैव ऑफन स्टार्टेड एडवोकेटिंग कि सिविल सोसाइटी इंडिया में एट द ब्रिंक ऑफ एन आई डायरेक्ट एक्शन लेने को लिए तत्पर रहती है। दे प्रोटेस्ट फॉर ए, हड़ताल डिक्लेयर कर देता है। अब द प्रॉब्लम इज नॉट डायरेक्ट एक्शन, द प्रॉब्लम इज हाउ दिस एक्शन इज टेकन। कैसे? एक डायरेक्ट एक्शन होता है प्रोटेस्ट, एक डायरेक्ट एक्शन होता है सिविल डिसोबीडियंस। समझ में आया? यस सर। ब्रेकिंग द लॉस। इंडियन सिविल सोसाइटी की एक बहुत खराब आदत यह है कि वो डायरेक्ट एक्शन तो लेती है, बट दोज डायरेक्ट एक्शंस आर मेनी टाइम्स in the forms of civil disobedience. Means they many times in the form of protest, many times they themselves become the law breakers, not law abiders. कैसे? रोड ब्लॉक कर दी जाती है, रेल ब्लॉक कर दी जाती है, घेराव कर दिया जाता है। मानेसर प्लांट जो मानेसर में है मारुति का, ट्रेड यूनियंस ने मिलकर मैनेजर की हत्या कर दी। दैट इज कॉल्ड एज सिविल डिसोबीडियंस। ऐसा डायरेक्ट एक्शन अच्छा नहीं होता, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग और सेटिंग ए रॉन्ग एग्जाम्पल हियर। गुर्जर आंदोलन जो हुआ था राजस्थान में, अभी भी कई दफे चलते रहते हैं। उनके जो लीडर थे, शायद 1-2 साल पहले उनकी डेथ हुई थी। यस सर। आंदोलन आए दिन राजस्थान में चक्का जाम करके बैठ जाते थे।
कि रेल भी रोकी जाती थी, रोड भी रोकी जाती थी। इससे क्या होता था? सेम फार्मर्स प्रोटेस्ट में इधर हुआ, सांगली बॉर्डर ले लो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर बॉर्डर्स। इससे हुआ ये कि कई बार पीपल बिकम द विक्टिम ऑफ ऑल दीज प्रोटेस्ट। So one important problem in the Indian civil society is that civil societies in India are what our prime minister often said, आंदोलन जीवी। याद है? सुना था कि नहीं? फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर हमारे प्राइम Yes, sir. मिनिस्टर ने बोला था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि आंदोलन जीवी हैं हम यहाँ पे। मतलब Yes, sir. आपका अल्टीमेट गोल ही है सिर्फ आंदोलन करना। Issues become sidelined, protest becomes end in itself. Such categories of actions are something which are more destructive in nature rather than being constructive in form. Coupled with this, civil society is also marred by certain other deficits. Most of the civil societies are having outside leadership. कि कई बार फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन जो उनके लीडर्स है वो खुद फार्मर्स ही नहीं है, वर्कर्स हैं लेकिन उनके जो लीडर्स है वो खुद वर्कर्स नहीं है, खुद वो एलीट विंग को बिलोंग करते हैं। इस टाइम के अंदर क्या होता है? उनके रियल इंटरेस्ट को कभी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव्स। नाउ व्हाट इट मींस इज कि आज एक टाइम था, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, जस्ट लाइक दिस, बिकॉज yes, फीडबैक sir. तो कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं। नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब क्या है? Earlier, the civil society in India was aggressive on restraining the state to do certain action. Today, the civil society is more focused on influencing the state to do certain actions. समझ में आया? Yes, sir. सिविल सोसाइटी पहले इंडिया में कैसे काम करती थी? नई स्टेट आप ये नहीं कर सकते, आप प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते, आप ये वो नहीं करना है। ये आज सिविल सोसाइटी स्टेट को प्रेशराइज करती है टू डू समथिंग। अरे वेजेस बढ़ाओ, अरे मिनिमम वेजेस बढ़ाओ, अरे वर्किंग आवर की लिमिट लगाओ, अरे ये वाली चीज करो, अरे अरे क्रचेस की फैसिलिटीज दो, मेंसेस के लिए लीव्स दो, या फिर रिजर्वेशन दो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स। सो दिस इज व्हाट आई मीन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। The another change which have taken place in the Indian civil society in the recent time is that when earlier civil societies focused on restraining the acts of state, today the civil societies are more propagandizing for state to perform certain actions for the well-being of their respective members or in order to achieve their objectives. And last, Indian civil society is greatly divided. और शायद इसके कारण कभी भी वो रोल प्ले नहीं हो पाया जो रामचंद्र गुहा वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। डिवाइडेड का मतलब इंडियन सिविल सोसाइटीज ऑफन एंड अप अपोजिंग ईच अदर। क्यों? क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है, डिफरेंट कॉर्पोरेट एंटिटी से फंडिंग होती है, या फिर डिफरेंट सेट ऑफ कास्ट या क्लास आइडेंटिटीज पे चलती है। दे एंड अप अपोजिंग ईच अदर। एग्जाम्पल देता हूं, जस्ट ए सुपरफिशियल वन। बैंक क्लर्क यूनियन और बैंक मैनेजर्स एसोसिएशन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं और अल्टीमेटली फायदा बैंक चेयरमैन या बैंक्स को होता है। वो दोनों बिकम क्लर्क की बेटरमेंट की बात करोगे तो मैनेजर्स अपोज कर देते हैं, मैनेजर्स की बेटरमेंट की बात करते हैं तो क्लर्क को। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिविजन इनका कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर कभी बढ़ नहीं पाया, and as a result the activities or the development which the civil societies could have brought in India, that more or less remains. The development although happened, but it could not happen at the level which the potentials of Indian civil societies exist. Is the point of civil, is the contribution of civil society clear to every bacha of mine? Yes, sir. अब कभी क्वेश्चन आए, discuss the factors which hinders the growth of civil society in India, right? Sociologically, can you write it? Yes, sir. Discuss the factors responsible for the, make a comparative study of civil society in West and India. Can you make it? Yes, sir.
What are the factors which hinders the growth of civil society in India? Can you again write it? Yes, sir. Discuss the role of civil society in democracy. Can you write it? Yes, sir. Discuss the role of civil society in bringing social change. Can you write it? Yes, sir. जितने scholars देखे थे आपने. Yes, sir. Thank you so much. I'll wind up the class here. I'll see you tomorrow with the new topic, political parties. बहुत ही factual सा topic है, almost never asked from past 10 years, but yet we'll do it थोड़ा सा broader manner के अंदर, and after that we'll go to democracy. Take care. After that we'll go to politics. देखते हैं कौन सा है next. Political parties कल Yes. पहले start करूँगा. Take care. Have a pleasurable day. Sir, हाँ sir, हाँ. sir, I sent you a message regarding your book. Please check it, sir. अच्छा टेलीग्राम पे भेजा है क्या? सर इंस्टा पे मैंने आपको मैसेज किया था बट काफी पहले किया था चलो ठीक है, मैं क्लासेस ज्वाइन टेलीग्राम वाला करने चेक से कर पहले। लूंगा. ठीक है, आज चेक करूंगा फिर. यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू.